So in our previous video, we have discussed about the API gateway Ocelot. That what is the API gateway and what is the Ocelot and why we need that. So in this video, we are going to discuss about the two type of communication in the backend services. Like we have a sync and we have async communication. Yeah. So hello everyone, my name is Manharsinh Jadeja और मैं आप सभी का मेरी चैनल डिबग डायरीज में स्वागत करता हूँ. So now the thing is, let's say we have three services S1, S2, and S3. So from the communication between UI to our backend services, we have defined the gateway. But now let's say we want to internal communicate between the different services. Let's say I have a product inventory service and second is a payment service. So when I am going to do some operation in the payment service, let's say I have to get particular product data, so that will be remain in the S1 as there will be a different database for the S1. We have a different database for the S2, so that particular data I have to get from the S1. So now that is the communication and how that I can do. So whenever we are discussing about the communication in the microservices, we have a sync communication and second is an async communication, we can say. So now what is the difference between the sync communication and the async communication is, so now let's say अभी मेरी दूसरी सर्विस में मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ. So before doing the payment, I want the data from the service one. सो नाउ ये कैसा डेटा हो गया कि जो मुझे मैंडेटरी चाहिए. Without that data I am not going to proceed further. So in that kind of scenario I have to use the sync communication. That means that I mandatory I need some data from that particular service और उसके बाद ही मैं अपनी फंक्शनलिटी को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ. सो अगर मुझे सर्विस वन से कुछ डेटा चाहिए और इनकेस सर्विस वन फेल हो जा रही है, दैट मीन्स दैट इज द वन आई कैन से द ब्लॉकिंग पार्ट विल बी देयर. दैट माय सर्विस वन इज नॉट वर्किंग, सो माय सर्विस टू विल बी ब्लॉक्ड ओवर देयर. So that we can say the sync communication, that I want some data from the service one, and with the help of that data I want to proceed or I want to do something in the service two. So let's say I want some product data, so I will get from the S1 database and I will use that into the S2. Now what is the async communication? That let's say I have placed a successful order. ऑर्डर भेजने के बाद और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें मैसेजेस आते हैं, वी हैव ईमेल्स अबाउट आवर ऑर्डर कंफर्मेशन. सो वो सब क्या है, असिंक कम्युनिकेशन है, वी कैन से. सो नाउ व्हाट इज द थिंग दैट आई हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड माय ऑर्डर. उसके बाद मुझे एक नोटिफिकेशन यूजर को भेजना है एंड दैट नोटिफिकेशन इज नॉट आई कैन से दैट आई एम टोटली डिपेंड ऑन दैट. वो नोटिफिकेशन जाता है नहीं जाता है उसके रिस्पॉन्स से मुझे कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा. सो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वेट नहीं करूँगा वो रिस्पॉन्स के लिए. सो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं असिंक कम्युनिकेशन कर सकता हूँ. उसमें क्या होगा, लेट्स से आई हैव अ S3 सर्विस. सो S3 इज एन नोटिफिकेशन सर्विस एंड जब भी S2 के अंदर ऑर्डर प्लेस होता है, आई हैव टू नोटिफाई द S3 सर्विस दैट मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है. तुम अपनी तरह से अपने साइड से जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम नोटिफिकेशन उसको भेज देना. इट इज़ लाइक दैट. So I'm not going to wait here while I'm going to wait in the sync communication. Now the thing is that how we can implement the sync communication and how we can implement the async communication. So sync communication mainly हम HTTP के यूज से कर सकते हैं. So now मुझे sync communication implement करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, you can use the gRPC, you can use the simple REST API that we are calling the HTTP call, or you can use the GraphQL call as well. सो दिस इज द सिंक कम्युनिकेशन. सो एक डेटा का आंसर आएगा, कोई भी मैं एक एपीआई का कॉल कर रहा हूँ उसका मुझे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ लाइक दैट. नाउ सिंक कम्युनिकेशन मुझे करना है तो व्हाट आई कैन डू दैट आई कैन यूज द RabbitMQ, आई कैन यूज द Kafka, आई कैन यूज द सर्विस बस. तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी मुझे असिंक कम्युनिकेशन करना है तो मैं RabbitMQ के अंदर लेट से क्यू आती है तो मैं क्यू के अंदर
एक डेटा पुश कर दूंगा। दैट मीन्स क्यू में पता चलेगा कि जब भी मुझे वो डेटा रिसीव होता है, दैट मीन्स आई हैव टू सेंड द नोटिफिकेशन. So there will be a one publisher in the S2 side, there will be a one consumer, we can say, or the subscriber into the S3 side. सो जब भी मैं कुछ पब्लिश करूंगा S2 साइट से, S3 साइट से वो कंज्यूम हो जाएगा. और लेट से एज्यूम करो कि S3 साइट हमारी और सर्विस बंद है अभी, दिस इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ. सो उससे क्या होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट से आई हैव टू सेट द सम नोटिफिकेशन डेटा टू द S3 कंज्यूमर. सो अभी मेरी S3 साइट बंद है, तो वो डेटा देर विल बी अ स्टिल विल बी देयर इन टू द अवर क्यू. सो वंस जब भी वो S3 सर्विसेज स्टार्ट होगी, वो दैट पर्टिकुलर क्यू से वो डेटा लेगा और आगे जाके वो प्रोसीड करेगा. सो दैट इज वो that is all about the async communication. So this was the sync communication and async communication.